the best way is to go through two things. Number one, selling your products into e-commerce portal like Amazon.com, any other similar products like Alibaba. India Mart also giving good exposure. So in that you list your product in an international market and you showcase your product that these are our products, and this is one way. Second way is very good way. Second way is also very good way. Like government of India is giving very good schemes, market access scheme, market development schemes, MSME international cooperation scheme. Government of India is saying that yes, if you have the potential, you go to overseas market, you exhibit your products in the fair, and we will bear your airfare, we will bear your sample charges, we will bear your maximum stall charges also. Hello everyone, I'm Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Mr. Vikas Singh Chauhan. He is a visionary leader and co-founder of Messrs. Skier Exports and Imports Private Limited. Embarked on his entrepreneur journey when the company was incorporated in 2009, serving as a board member and holding the esteemed position of executive director. Since February 26, 2000, he bears the overall responsibility of for the textile business division. Guided by his insightful leadership, the company has achieved remarkable growth, expanding its footprints in more than 70 countries across the globe. He envisioned the power of collaboration and mutual growth, leading him and his co-partners Anant Srivastava to establish the Home Textile Exporters Welfare Association, which is also called as HEWA. The association was created to include MSME group and provide them the invaluable support and guidance. HEWA plays a pivotal role in addressing various aspects, including enhancing the export-import processes and ensuring that entrepreneurs are well informed about trade laws and policy guidelines. The comprehensive support system empowers businessmen to navigate the complexities of international trade effectively. He holds a postgraduate degree in Masters of International Business program from the Institute of Management Studies, Dehradun. Underlying his commitment to excellence and expertise in global business arena, today he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome Vikas, the platform is open and now over to you. Thank you, Sarji. Thank you. I am very happy and very thankful to you for inviting me and sharing my story via YouTube to everybody. And I will discuss with you about my journey and what are the prospects of international business and how youth can join into this business. This is very challenging business, but equal opportunities are waiting for our youth in the international market, because when you are marketing something in India, so we have a limited market of Indian. We have very limited market, but if you go for international business, challenges are big, but opportunities are also equally big. Thank you. Great. So just to appraise about me, like I've been handling this business in banking for almost 18 years. So I also very likely like to talk about export-import business. So that would be an interesting one. So first thing I'd like to know from your side is, how did your past life has affected the person you actually wanted to be in your life and what you are? So it's moreover related to your childhood memories, like when you would be having certain thoughts in your mind that you want to pick this career or have certain other. So from there to your entrepreneurial journey, how like your thoughts transform? Actually, starting from the beginning, I was my family belongs to a farmer family, and my all grandfather, father, everyone was in the police background. So I started my journey as a bio graduate student. In the beginning, I want to become a doctor, but slowly and gradually, business started inspiring me. I want to do something different. I want to help others. I want to create something for me as well as for others. I want to create value for the society. So graduating in zoology, botany, like biochemistry, you can say. So graduating in biochemistry, after that, I was thinking that like, okay, I can do MBBS. But after completing my coaching of MBBS, I started thinking to go do some
something different. So I joined the Masters of International Business from Institute of Management Studies, Dehradun, and this is my the beginning of the story. And then I did my research work, and after doing the research work, instead of joining the job, I started as an entrepreneur. And from like I didn't take anything from my home. This journey started from like rupees 5,000 rupees as a pocket money which I received, and slowly and gradually I moved forward towards entrepreneur in the export-import business. First, we started as an importer. We imported like electronic goods from Hong Kong and everywhere, and then we after starting with the importer, from in a few months itself, we came to know that like import is okay, but we need to do something for our country, for our made in India goods, because our Indian quality is better than any other place. So we started doing export from that. Right, that's really wonderful. So now if I ask you about things you are passionate in your life, so what are those things, and what is the role of motivation and inspiration onto it further? My passion is to see our country a developed country. This is my passion. If you say that like it is not, someone can say that it is how this passion can be your personal passion, but yes, it is my personal passion to see my country is growing like anything, and my country is beating China in the export turnover. My country is a developed country. So my passion is to see my young entrepreneurs competing with any other Chinese exporters, any other Vietnamese exporters. So this is my passion. I want every youth to do something different. So for that reason itself, other than our export, Star Export and Import Private Limited, which we are exporting like home textile products, we thought to make something different so that we can help others to grow together with us. So we formed one Home Textile Exporters Welfare Association. In that association, which is started from like issues of exporter, so we can resolve the issues of exporter and we can take up that issues with the government. So from that thinking, we move forward to see like how our youth can compete with other international youths. So we started this HEWA as a budding training center, you can say. So in that we give training to the youth, so how they can compete in an international business. For me personally, motivation plays a very important role. Like sometimes we also feel very negative, like can we do this, can we not do this. So yes, motivation is a very important part. Like spiritual motivation, we have guided motivation from our gurus. Like we have so motivation is very rare. You are right that motivation is very, very important part of our life, because from motivation, from inspiration, we get energy to do something different in our society. Right? Yeah, I am very much motivated by you. Like you are being a banker, you just started your YouTube channel, so it's also a kind of motivation to me. Now working on so my these small things I take motivations. Yeah. Right, amazing. So really important, like motivation and inspiration really plays an important role in our life. Yeah. And if we are in right direction, definitely it can create more meaningful impact, so that we can be like on right path, right track, and do things in a right way. So now if I ask you like about your work and experiences, how you started your career and what all you did so far, and before that, have you done any job also, or you directly started your entrepreneurial journey? Like I told you before that, when I completed my Masters of International Business, so I came to Delhi from Dehradun to get a training in that particular sector. After training, I realized that if I start my own journey, because when I start the job, so instead of starting the job, me and my other colleague, who is also my colleague in my college days, so we both sit together and we thought that let's start something, because something is better than nothing. So we came here for a training. Then in the training itself, we started our Star Export and Import Private Limited, because we want to do something different in a society. So first, as I told you before, that we started from an import of MP3 products like mobile phones. So from that journey, we slowly realized that our Indian products are very good, and especially textile sector is very appealing sector, because it can provide mass employment, and very little knowledge is required to start something in this particular textile sector. And if you talk about employment, that like if for example if I start my weaving factory, so in
in this textile sector, we can indulge semi-skilled as well as non-skilled person also with a bare minimum training. So this textile sector is very positive, and our India is very good in textile. Like our from the time of अंग्रेजों के जमाने से आप you as you know that they came here for cotton, सूत का कपड़ा यहाँ से जाता था, सूत का धागा यहाँ से जाता था, वहाँ से बन के आता था. So this textile sector, we started in a textile sector from carpet. Then slowly we expanded ourselves to towels, bedsheet, and all the other home textile items. Because when we talk about home textile sector, when we talk about cotton, so India itself gets some edge over other countries. So after starting with one consignment, first consignment to Italy in a bath mat, then we move forward to France, and now expanding ourselves to more than like you said earlier that up to 70 countries we are already doing the exports. But yeah, it is challenging, very challenging journey, starting from some issues with like one shipment we sent to Nigeria, that container got badly stuck. So these issues are also there. These issues give us learning. These issues give us, like you said, personally, it gives us motivation to do something better. And yeah, correction also, that how we should do, because like I said earlier, that export is very big, gives us very big opportunity. Plus some challenges are also there. So this is my journey. And understanding international law, international practices, and very important. People is also really important. So now, if I ask you about your vision, mission, and goal in life for next 5 to 10 years, what would that be? Look, vision, if you talk about vision, so our vision is like, we personally want, as a HEWA, Home Textile Exporter Welfare Association, if we talk about, then we want India to be completing in a world trade. Like if you know, as you are a banker itself, yourself, you are a banker. So abhi apna India ka jo global percentage is less than 2%. Correct. So my broader vision is to see our country as growing from like 2% to 10% in the next 15-20 years. And personal scar export and import, if I want to talk about the vision of Scar Export, our personal company. So I want like now we are exporting the goods in international market. But my vision is to see like we have distributors, proper channels set up in all the countries, overseas countries, maximum countries like US, Europe, and everything. Like minimum 3 to 4 dozen countries we have our own distribution network. So my vision is to see our country as a successful international brand catering to all the major markets with own distribution network. And for that vision, we have our goals, we have our missions. Mission is to give our products a sustainability feature. Like you know well that climate change is a very big issue. और जब हम कभी टेक्सटाइल की बात करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले उसमें आ जाता है कि फास्ट फैशन की बात हो रही है, कि आप एक बार कपड़े पहन रहे हो दोबारा नहीं पहन रहे हो. तो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि डाई में कितना पानी यूज होता है. फिर बात आ जाती है कि केमिकल जो यूज होता है वो कैसे उसको रिसाइकिल करेंगे. तो these all the things are very appealing. And if we talk about textile, and in next few years we have to talk about sustainability along with that textile. Regardless of whatever item we are doing, हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी. लाइक इफ यू सी हाउ मच पोल्यूशन लेवल टुडे इज इन दिल्ली. तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो प्रैक्टिसेस, रिसाइकिल, reusable, these are very important things. So we personally want to export a product which we proudly say that this is a sustainable product, which we have taken care all the residual waste, we have taken care of the chemicals, we have taken care of water waste management. So उसके लिए what we have started, हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिसाइकिल कॉटन के कपड़े बनाना शुरू कर रहे हैं. हम लोग रिसाइकिल किचन टॉवल बहुत खूबसूरत बना रहे हैं. इससे क्या what clients are feeling. Recently we participated in a high point market fair which is in US. So वहाँ पे हम लोग जब गए तो we met a very big businessman. So वहाँ पे जब मुलाकात हुई तो उनसे भी मैंने कहा कि इंडिया का प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं. लाइक यू नो दैट सालों से हम लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने यहाँ एक साड़ी भी आती तो उसको कट के पोंछा बन जाती है. तो when we inform them like our Indian goods are sustainable products, our Indian are quality products plus sustainable products. तो उन्होंने कहा कि look Vikas, we cannot afford sustainability in the prices. Like for example, if you say that your products are sustainable but they are costly by into 2 into 3, like West we are looking in other countries, in the name of sustainability they are selling it like vegan products, for example. If you see, तो sustainability के नाम पे they cannot afford extra money. Like they cannot pay you like 2 times 3 times in the name of sustainability. So then we explain that no, Indian story is something different. So we
Indian story is like our sustainable products are cheaper than original cotton rates. For example, if we are making from recycled garment waste, recycled yarns we are using in our kitchen towels, in our bedding, it is 30% cheaper than what market is offering in original cotton prices. Correct. So our products are reusable, our products are sustainable, plus our products are cheaper also. तो ये इंडिया की स्टोरी हमको बताने की जरूरत है. This I came to know, and I know that in next on that center stage itself, I said that next 20 year belongs to India. Now, whosoever wants to sit in this trend and earn money, they should have to focus on Indian market. So our India is, few challenges are there in Indian market. We understand, we accept that, like infrastructure issues. We have some delays in the custom banking procedure, as you are banker yourself. But other than that challenges, we have edge also in respect to other countries. Like we are giving you cotton, we are giving you recycled, we are giving you a product which is perfect for your next generation. So my few goals are like, we have to export a little bit better, because you know that all mission, vision and goals are, everything failed in that COVID, during COVID time. So we have to, like you said, we have to motivate ourselves, like कुछ करते हैं आगे, कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा होता है तो सारा जो भी एमवी और जी जो भी चीजें हैं तीनों, ये सबकी जीरो हो गई थी. तो फ्रॉम स्क्रैप इटसेल्फ वी लाइक चैलेंजेस थे बहुत सारे. अभी चैलेंजेस से हम लोग धीरे धीरे उभरे हैं. पूरा वर्ल्ड अभी उभरा है. अभी देखो आप इजराइल का जो इशू हो रहा है, अभी आप रशिया का इशू देख लो. तो इफ थिंग्स गॉट एस्केलेटेड, तो एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस हैं, बट इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे साथ में. अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने का बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय द गुड्स फ्रॉम इंडिया. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ चाइना. दे वांट टू बाय फ्रॉम इंडिया, बट are we able to supply them, because order quantity is very big. तो अभी क्या है, हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है कि कैसे हम उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़े चैलेंजेस को लेकर आती है. Rightly said. Or if I ask you like further, what are the most important life lessons you have learned from your personal and professional journey so far? बहुत कुछ सीखने को मिला है. पहली बात तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्सपोर्टिंग जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस. Correct. It's not a one day thing. For example, one day is bad, second day is very bad, maybe third day is worse, but fourth day you will get the reward of all these sacrifices which you have done. So effort, ये एक regular effort का process है. इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ या 6 महीने में कुछ कर रहा हूँ तो हो सकता है तुरंत effort का रिजल्ट मिल जाए. तो ये अपनी जर्नी से मुझे ये समझ में आया है. I will share you one very interesting story. When we started our career, after doing export to France, Italy, then a sudden moment came in our life that export was very dim, and we thought कि चलो अब कुछ नहीं हुआ इस महीने, जैसे होता है स्टूडेंट लाइफ में कि just we have completed our journey as a masters of international business. फिर we started our business. Financial issues भी थे कि how we are catering ourselves as well, basic needs, plus we have to export also. तो एक समय ऐसा है कि लगा चलो अब नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग जॉब कर लेंगे. अब नहीं हो पा रहा है, अगर लग रहा है कि चलो नहीं हो पा रहा है, बट वी थॉट समवेयर कि चलो इतना मेहनत किया है तो ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें उस मेहनत को. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर हम लोग लगे रहे, सबको ऑफर भेजते थे, सबको प्रॉपर बात करते थे. बिना, जैसे बोलते हैं, अब गीता में बोला गया है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो फल की चिंता, फाइनेंशियली बर्डन की वजह से फल की चिंता हो ही जाती है, लेकिन फिर भी पर्सनल एस्पिरेशंस को, पर्सनल चीजों को साइड में करते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मेहनत किया और लगे रहे. फिर क्या हुआ कि जिस बायर से मैं पिछले 1 साल से बात कर रहा था, आप मानोगे नहीं, he all of a sudden sent us deposit that yes, this is the order of 120 feet container, you just send us the goods. And तो उससे ये पता चला कि export is a continuous journey. Not only export, entrepreneurship is a continuous journey. It's not like one time you do something and you expect that other day you will get some fruit. तो ये ऐसा नहीं है. तो इसलिए इसमें इस प्रोफेशन में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना. ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है कि जैसे एक चींटी होती है, धीरे धीरे अपना वो लगी रहती है. हो सकता है वो कितनी देर में अपनी जगह तक पहुंचेगी, हो सकता ना भी पहुंचे, क्योंकि इतना चैलेंजेस रहता है. तो वो उसी तरीके से ये कंटिन्यूअस जर्नी है, ये आप समझ लीजिए. Rightly said. So since you've been working on exports and you are like connected with so many manufacturers in your assignment with HEWA, so onto this, if I ask you, like, what is the initial step a small manufacturer should take when considering entering into an export market? So especially if they have limited prior experience in international trade. So we can say that these small manufacturers or traders, they don't have international exposure. So how they can like think of starting actually? ये सबसे बड़ा, बहुत अच्छा आपने ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं मिलता हूँ जब मैं when I meet MSME sector
से मिलता हूँ, तो दे से दैट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, वी आर स्मॉल, वी डोंट नो हाउ टू एक्सपोर्ट। तो ये जो हाउ टू एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, ये सबके मन में आता है कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें। लाइक फ्यू वीक्स बिफोर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वन समिट इन बनारस, तो वहां भी जो एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आए थे या फैशन डिजाइनर्स आए थे, तो दे वर जस्ट आस्किंग हाउ वी कैन एक्सपोर्ट आवर गुड्स। Right. So this is the biggest question what everybody have in their minds, that कैसे हम एक्सपोर्ट करें अपने गुड्स को। क्या उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं? क्योंकि जहां आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, जहां कुछ बड़ा इंटरनेशनल जहां पे लग जाता है, तो वर्ल्ड अपने आप में, जैसे एज अ बैंकर आपको पता होगा कि लोगों के मन में एक ऐसी धारणा आ जाती है कि वी स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ इट इज अ इंटरनेशनल बिजनेस इट विल बी वेरी चैलेंजिंग प्लस नीड्स लॉट ऑफ मनी। जबकि ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर होना है तो उसमें पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे का रिक्वायरमेंट नील के बराबर है। आपका बस आप होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और आपकी स्टोरी को कोई बताने वाला होना चाहिए। योर स्टोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है, आपका प्रोडक्ट अगर कम्पिटिटिव है, इफ योर प्राइसिंग इज गुड, तो बायर विल पे यू द मनी। Buyer wants to buy the goods. Buyer is willing to pay the money, but they want their safety of their money. They want different goods. They want quality products because they also want to earn, and they will let you earn so that you can also sustain in the business. Right. तो अभी नए दो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या अभी देखो दो चीजें हो गई। एक हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई नॉर्मल हम आप जो जॉब कर रहे हैं, अपने रोज जॉब कर रहे हैं, and they want to enter into an international business, like directly into an export business. They want to start some manufacturing unit and they want to export. That is one different thing. एक है जो MSME सेक्टर ऑलरेडी कुछ बना रहा है, already established है in the domestic market and they want to start export into the international market. तो अभी अगर बात करते हैं कि पहले ये ले लेते हैं कि कैसे एक MSME सेक्टर जो already they are manufacturing something, they are supplying to like domestic market and they want to expand themselves into an international market. In that situation, the best way is to go through two things. Number one, selling your products into e-commerce portal like Amazon.com, any other similar products like Alibaba. India Mart also giving good exposure. So in that you list your product in an international market and you showcase your product that these are our products, and this is one way. Second way is very very good way. Second way is also very good way. Like government of India is giving very very good schemes, market access scheme, market development schemes, MSME international cooperation scheme. So these schemes are doing. Government of India is saying that yes, if you have the potential, you go to overseas market, you exhibit your products in the fair, and we will bear your airfare, we will bear your sample charges, we will bear your maximum stall charges also. Just you go there, you showcase your products that these are your products, these are your quality, these are your pricing, and you start your export journey. So government of India is giving full hand holding to all exporters. You know, I appreciate our government, that government is equally giving very very good exposure, very very good market opportunities. Like recently if you heard that Bharat Tex जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर होगा, वो पीयूष जी ने अभी इनॉग्रेट किया उसको, कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे होगा इंडिया में। So what government is doing, government is already giving you a very very good platform where you can showcase your products in the exhibition. Either government will organize that fair, or second way, either government will bear the cost of that fair. तो दोनों ही तरीके से पहले आप एग्जीबिशन से चलो, एग्जीबिशन में जाके अपने प्रोडक्ट्स को लगाओ, ऑर्डर लो और अपना जर्नी स्टार्ट करो। आप छोटे ऑर्डर से करो। इफ यू वांट टू स्टार्ट, डोंट गो फॉर अ कंटेनर बिजनेस, गो विद अ वेरी स्मॉल थिंग like less container load, like 10 boxes, 20 boxes. So you start your journey with a small export, taking money upfront. जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो वहां पे बायर जब आता है तो उसको लगता है कि हाँ क्रेडिबल सप्लायर है, क्योंकि वो आपसे सामने मिलता है। आपको ऑनलाइन क्या होता है, उसको ऑनलाइन लगता है कि पता नहीं आइडेंटिटी कैसी है, क्योंकि इतना फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो जब आप एग्जीबिशन में जाते हो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टैग लगा होता है साथ में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड एक्सपोर्टर है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हो, वहीं पे वो ऑर्डर प्लेस करता है, आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है। अप टू 50% बायर्स आर गिविंग, 30% इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल बिजनेस, 30% एडवांस। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, आप उसको शिप करते हो, तो शिप जैसे ही करते हो उसके बाद आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आता है कि हाँ प्रूफ ऑफ शिपमेंट आ गया। उसको जब आप बायर को भेजते हो तो रिमेनिंग पैसा कर देता है। तो दिस इज वेरी सेफ एंड सिक्योर थिंग। उसके लिए, इस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग इंश्योरेंस पे जा सकते हैं। ईसीजीसी इंश्योरेंस होता है, काफी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लस बैंक भी काफी सारे फैसिलिटीज दे रहा है। तो वी कैन यूटिलाइज दैट फैसिलिटीज आफ्टर कंसल्टिंग विद योर बिजनेस बैंकिंग पार्टनर।
And तो ये most एमएसएमई की कैटेगरी जो आपने पूछा जी। right, and most important thing is government is supporting and guiding on this thing. Or apart from that, if you like these people, like these manufacturers, if they go to their bank is also willing to guide them and Yeah, support right, them right, in right. the documentation Yeah, part required for the transaction. So yeah, yeah, it's really important for any SME who is willing to go for an export to gather the information these days, and they can yeah. really find it easy if they take the first step. They want to do it. Like thought Yeah. is really important. So now, if I ask you, like, are there any specific industry or product that are better suited for a small manufacturer looking to start exports, or can anybody do it? So, like, how can manufacturer identify if their product have that kind of a niche which can be exported? So, on that terms, India is almost making everything nowadays. Everything. If we talk about before 10 years, 15 years, we were lacking in mobile technology, like mobiles are manufactured in China. But nowadays, if you see, India is almost making everything. So there is no parameter left that what you cannot export or what you can export. We have almost comparative advantage in almost every products. correct. तो अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर करना चाहता है, उसको इजीएस्ट प्रोडक्ट चुनना है, तो आई कैन से दैट चलो इजीएस्ट के लिए आप कुछ भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, लाइक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट उठा लो। क्योंकि क्या है कि व्हेन वी स्पीक अबाउट हैंडीक्राफ्ट इन ओवरसीज मार्केट टू एन इंटरनेशनल बायर, दे ट्रस्ट आवर क्वालिटी, दे ट्रस्ट आवर इंडियन स्टोरी, दैट यस, इफ वी बाय समथिंग फ्रॉम इंडिया इन दैट सेक्टर, पर्टिकुलर इन हैंडीक्राफ्ट थिंग, then our weavers will do our part. Correct. So our weavers story is very famous globally. So ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे आप लिमिटेशन नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में कि आप इस प्रोडक्ट को ही कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी आपको प्रोडक्ट करना हो, उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्या प्राइसिंग उसकी आ रही है, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी है, उसकी हम डिलीवरी कब दे पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट इज टू नो योर प्रोडक्ट। सो व्हाट प्रोडक्ट यू आर एक्सपोर्टिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रोडक्ट यू आर नोइंग। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पहले अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने अपना इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर उठाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे शहर सीतापुर से बिलोंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल, तो मैं देखूंगा कि मेरे सीतापुर में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, व्हाट वी आर गुड एट, या मेरे रीजन में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है। फॉर एग्जांपल सीतापुर की अगर बात करें तो वहाँ दरी अच्छा बन रहा है, सोलापुर की बात करें तो वहाँ टॉवल अच्छा बन रहा है, मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ ब्रास के हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं, पानीपत की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्लैंकेट अच्छा बन रहा है, वहाँ पे और भी अच्छी चीजें बन रही हैं। फिर अगर इफ वी टॉक अबाउट तिरुपुर, तो वहाँ पे उस क्लस्टर में मैं देखता हूँ कि गारमेंट बहुत अच्छा बन रहा है। सो व्हाट प्लेस यू आर हैविंग योर आइडेंटिटी, व्हाट प्लेस यू बिलोंग्स टू, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। या उसके अलावा हम ये सर्च कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को जानोगे नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो जिसका जो सेक्टर जिसका एक अलग से एक लगाव होता है प्रोडक्ट से, तो मेरा लगाव, मान लो मैं ऑटो पार्ट्स में मुझे लगाव है, तो मैं आई एम कीन टू नो अबाउट मोर अबाउट ऑटो पार्ट्स। मुझे टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, तो आई एम मोर इनटू, आई एम कीन टू नो अबाउट दैट पार्ट। कुछ लोगों को एनर्जी में बहुत अच्छा होता है कि दे वांट टू नो हाउ कोल कैन बी सप्लाइड, हाउ कोल कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल अबाउट नोइंग योर प्रोडक्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू लव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को जानते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, उसकी टेक्निकल थिंग्स को जानते होंगे, तो आप आगे बायर को एक्सप्लेन कर पाओगे। व्हेन बायर डील्स विद द एक्सपीरियंस पर्सन, सो it generates a very very good trust between buyer and seller. So this is most important. Yeah. Right. So first important thing is you know your product very well. Yeah. Keep in, Yeah. and you explore things like what all available in your nearby areas. Yeah. But next target is identify markets where these products are in demand. Uske baad the next journey would start how to connect with these buyers and all. So onto this, if I ask you further, like, could you share some insight into the challenges a small manufacturer might face during the export process and how they can overcome these challenges? One of the example you already shared, like your container got stuck in Kenya. So similarly, what other challenges they might face? देखिए, एक्सपोर्ट जर्नी, जो एक्सपोर्ट का वर्ड है ना, वो ई से तो लिखना पढ़ी में शुरू होता है, लेकिन वो आप समझ लो कि सी से शुरू होता है, चैलेंजेस से। तो सी और ओ जो होता है एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में सी मतलब चैलेंज हो गया और अपॉर्चुनिटी अपने आप में। जब अपॉर्चुनिटी आती तो चैलेंजेस अपने आप में आते हैं। सो लाइक आई शेयर्ड यू दैट माय कंटेनर गॉट स्टक इन नाइजीरिया बिकॉज दे वर आस्किंग। तो अभी मैं आपको उसका बहुत डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा।
कि जो हम लोगों को सबसे पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है तो उसको सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल योर प्रोडक्ट्स आर रेडी, योर इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, नाउ यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। सो आप एग्जीबिशन में गए, आपको बायर मिला, नाउ यू हैव टू नेगोशिएट ऑन पेमेंट टर्म्स। सो बिफोर एंटरिंग, लाइक यू राइटली सेड, बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, सिट विद योर बैंकर, सिट विद योर काउंसिल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट्स की काउंसिल बना रखी है। फॉर एग्जांपल इन आवर सेक्टर टेक्सटाइल वी हैव 18 काउंसिल्स लाइक कॉटन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ काउंसिल्स। वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे आप बैठ सकते हो कि ये मैं प्रोडक्ट है, ये मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अभी के लिए मैं चैलेंजेस बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि आप अपने, फॉर एग्जाम्पल your product cost is 100 rupees and after selling this product you are going to get 10 rupees extra, 110 rupees। लेकिन अगर कहीं ये आपके 100 रुपए फंस गए तो योर 100 रुपीज अगर आपके फंस गए तो आपका पूरा कैपिटल ड्रॉप हो जाएगा और आप कई साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि प्रॉफिट इज लिमिटेड बट चैलेंजेस एंड रिस्क आर वेरी वेरी अनलिमिटेड। तो उस चैलेंज को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट इज गिविंग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, उससे हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। और नए एंटरप्रेन्योर्स को मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप कोई भी पेमेंट टर्म ऐसा पकड़ो जो आपको एक रिस्क कैटेगरी में डाले। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग क्या होता है, एक्सपोर्ट के लालच में वो DA पे दे देते हैं, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पे दे देते हैं। उससे क्या होता है, जब DA पे आप देते हो, मतलब DA का मतलब होता है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं बता देता हूँ, DA का मतलब होता है आप प्योरली उधारी पे माल देते हो। यू आर गिविंग योर गुड्स प्योरली ऑन क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर या एक दूसरा स्टेप होता है DP मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। उसमें भी क्या होता है, आप बैंक टू बैंक गुड्स आप डॉक्यूमेंट भेज देते हो, लेकिन कल को क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन मेनी टाइम्स कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपना गुड्स नाइजीरिया भेजा, आपने अपना गुड्स, यू सेंड योर गुड्स टू योर साउथ अमेरिका, सो फ्रेट कॉस्ट इज सो मच। Now young entrepreneurs comes into pressure to release their goods. For example, if you send your goods, you didn't get any advance. You now after sending your goods, you send your documents via your bank to their bank. And after getting the document, buyer started saying, no, I don't have foreign currency. You just send me the goods or you just release the documents without payment. I will pay you in 30 days, 60 days. So in that case, when this happens to anyone, I have seen that in many cases, exporter comes into pressure. तो एक्सपोर्टर जब प्रेशर में आता है, क्योंकि उसमें इतने चैलेंजेस यहाँ पे अपने कंट्री में, अगर आप एक बार आपका इफ यू डिफॉल्ट ऑन एक्सपोर्ट, आपको पता होगा, आप तो खुद ही बैंक कर रहे हैं, यू हैव टू रिफंड योर ड्यूटी ड्रॉबैक, यू हैव टू रिफंड योर GST, सो मेनी चैलेंजेस आर देयर। सो इसके प्रेशर में क्या करते हैं एक्सपोर्टर, वो गुड्स रिलीज कर देते हैं और उन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा होता है, तो उनका पूरा का पूरा पैसा मर जाता है। सो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा बिजनेस करो बट सेव करो। आप बड़ा बिजनेस करके अपने पैसे मत डुबो, तो थोड़ा सा बिजनेस करके आप बैंक के पास जाओ, आप बोलो कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आप मुझे हेल्प कर सकते हो, प्लस बायर से आप डिपॉजिट लेके ही करो। व्हाट चाइना हैज डन, व्हाट चाइना taught us that don't think that suppliers don't have the weightage. Buyer is always the boss. You negotiate with them, don't compromise with your payment terms. Payment term is most essential thing when you are making something and I am willing to buy. Your products is good, your prices are good, your quality is good. So don't compromise. Don't think that you gives your product on credit, then your buyer will generate the business. क्योंकि बायर के पास भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, आपसे सस्ता क्रेडिट उनको बैंक से मिल जाएगा, इंडिया से सस्ता क्रेडिट उनको बैंक से मिल जाएगा, और अगर इफ दे आर विलिंग टू बाय दे विल पे यू डिपॉजिट। सो इन द बिगिनिंग आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो फॉर ओपन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लाइक DA और DP, समथिंग लाइक दिस, और आप उधारी पे उनको दो। आप उनसे अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो LC भी मत करो स्टार्टिंग, क्योंकि LC में भी बहुत सी इश्यूज हैं। आप LC मान लो यूनान LC बायर दे देता है 30 डेज 60 डेज की, तो बहुत से सारे चैलेंजेस आते हैं, LC में भी चैलेंजेस हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि कुछ शिपमेंट्स आप एडवांस पे लेके करो, फिर आप लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट नए लोगों के लिए कि एक सॉर्ट ऑफ बैंक गारंटी है, जिससे आपके सर्टेन अमाउंट की सेफ्टी होती है कि हाँ अगर आप बैंक से बैंक देते हो तो वहां पे आपको पेमेंट मिलेगा। हम लोगों ने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बैंक ही फ्रॉड निकली। फॉर एग्जाम्पल जो अभी नाइजीरिया वाला केस हुआ था, उसमें जो बैंक था, कंसाइनी का जो बैंक था, इंपोर्टर का जो बैंक था, वो बैंक था ही नहीं एक्चुअल में। तो व्हाट हैपेंड टू अस कि वहां पे जब वी सेंड अवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक टू बैंक,
तो हम लोग को ये पता चला कि जो बैंक थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. एंड अवर इंडियन बैंक समटाइम्स दे कैन इन्फॉर्म यू दैट द बेनिफिशियरी बैंक इज नॉट अवेलेबल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भेजा था. सो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाज आल्सो नॉट एबल to inform them that this bank is not available in overseas market. So that fraud already happened to them. फिर जब हम लोग एम्बेसी में गए, उन्होंने कंप्लेंट किया एम्बेसी में, then they came to know that this bank is not existed in that country. So they directly send that document, means bank send directly to that documents to the buyer. तो उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट जैसे ही मिला उन्होंने गुड्स रिलीज कर लिया. इसीलिए डीपी एंड अदर दीज प्रोडक्ट्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स आई विल नॉट सजेस्ट डीपी एंड डीए खास तौर पे. But yes, we can go for deposit, then we can go for LC at site, and then slowly and gradually, when we have our expertise in that product, in that field, then we can go for any other. Like एक बार relation अगर export में बन जाता है, आप buyer को देख के आते हो कि buyer अच्छा है, then you can go for DA also after taking the insurance. You can give DP also after checking the bank credibility. So yes, we can do like this. But in the beginning of your journey, you don't go with the risky payment terms. Right. Yeah. So on to this further, if I ask you about like what are the government rules and regulations or trade agreements, export-import policy, a small manufacturer look into, like basic things from there they should be considerate about. देखिए, मैं इस क्वेश्चन को I will elaborate that first we discuss about already about how to export for a company who is already manufacturing. Now let's what you say कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को elaborate करते हैं, और let me start with the journey how a young entrepreneur or a young student who wants to come into this business can start their business, and what are the challenges, what are the policy issues, what are the government facilities. So I will just in a brief I will detail you all the things. तो अभी क्या है, for example, if I want to export, I am a designer, I have certain products और I am designing certain products. अब मुझे लगता है कि नहीं, I should move into entrepreneurship and I want to export. तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक हाउ टू एक्सपोर्ट का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. उस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास कंपनी आप डिसाइड करोगे, आपको प्रोप्राइटरशिप पे बनानी है. यू हैव टू मेक कंपनी इन पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और व्हाटएवर इट. सो एक बार दिस यू हैव टू डिसाइड. Once you already decided, you registered your company. After registering your company, you will take a PAN card. Then after taking the PAN card, आप बैंक अकाउंट खोलते हो, और बैंक अकाउंट से खोलने के बाद में बैंक will give a letter that bank is having your account from this and this date, active account. After that, you will get active import export code number from DGFT. आप उसके लिए अप्लाई करते हो, import export code number के लिए. Then you apply for GST अप्लाई करने के बाद में जब दोनों सब चीजें आपके पास आ गए, उसके बाद आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करते हो, जिस पोर्ट से आपको गुड्स अपना भेजना है. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू सेंड माय गुड्स फ्रॉम IGI पोर्ट, आई हैव टू सेंड माय गुड्स फ्रॉम नवा शिवा पोर्ट. तो आइस गेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी, अभी पहले तो बहुत मैनुअल होता था हर चीज, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर चीज ऑनलाइन कर दी है. आपको किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. आप नेट पे डालोगे, आप DGFT की वेबसाइट पे जाओ, आप उनके निर्यात बंधु स्कीम है, आप उनसे बात करो, दे विल हेल्प यू फॉर एवरीथिंग. फिर क्या करेंगे, अभी हम लोग ने पोर्ट में आइस गेट पे जाओगे, आप पे रजिस्ट्रेशन आप करिए, अपना एक यूजर ID बनाइए, उसके बाद आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करिए, बैंक से लेटर लेकर के. बैंक आपको एक AD लेटर देगी, अथॉराइज्ड डीलर कोड देगी, आपको एक लेटर देगी कि यस वी आर हैविंग दिस एंड दिस. वो पोर्ट के नाम पे एक लेटर देंगे कि ये ऐसा ऐसा एक्सपोर्टर है, उसका AD कोड नंबर ये है और ही इज हैविंग अकाउंट इन अवर बैंक. उससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट की जर्नी अब शुरू हो गई. अब यहाँ से आपका क्या है, आपका ट्रेन जो है वो बिल्कुल तैयार है मूवमेंट के लिए, रेलगाड़ी बिल्कुल तैयार है आपकी मूवमेंट के लिए. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस बायर से ऑर्डर लेने हैं और आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा. ये बहुत ही नॉमिनल चीज है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता. अगर आप CA को भी इन्वॉल्व करते हो तो मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार रुपए में, 20 हजार रुपए में मैक्सिमम आपकी एक्सपोर्टिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. और अगर आप खुद से करते हो तो बहुत ही नॉमिनल फीस है हर चीज की. गवर्नमेंट की तरफ से तो शायद कुछ भी, अभी पहले 500 रुपीज पड़ता था, उससे पहले 1000 रुपए पड़ता था, अभी पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि कितना पड़ता है. मेरे हिसाब से शायद अब पैसा नहीं पड़ना बंद हो गया. अब पैन कार्ड पे ही आपका, उसी पैन कार्ड पे के बिहाफ पे ही आपका IC एक्सटेंड हो जाता है, आपका पैन कार्ड ही आपका IC बन जाता है.
पहले होता था अलग से एक आईसी नंबर आता था, अभी क्या होता है आपका पैन ही एक्सटेंड हो जाता है। जैसे अभी जीएसटी में होता है, जीएसटी होता है कि पैन को ही एक्सटेंड करके बना देते हैं, वैसे इसमें भी अब हो गया है कि तो अभी गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है और इट इज वेरी वेरी इजी टू स्टार्ट योर एक्सपोर्टिंग जर्नी। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद एनी काउंसिल विच इज फॉर्म बाय गवर्नमेंट, लाइक सीओ पे आप रजिस्टर कर लो, आप किसी काउंसिल, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स यू वांट टू एक्सपोर्ट, यू नीड टू एक्सपोर्ट ऑन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग कारपेट एक्सपोर्ट, यू वांट टू डू कारपेट एक्सपोर्ट, यू हैव टू रजिस्टर विद कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो उससे क्या होगा कि आपको जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉवल एक्सपोर्ट करता हूँ तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा पहले तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, दो स्कीम लेके गवर्नमेंट आई है, रोड टैप और आरओएस। इन दोनों में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आपके एम्बेडेड टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके डीजल में लगा, पेट्रोल में लगा, मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके एम्बेडेड टैक्सेस वो गवर्नमेंट रिफंड करती है। तो ये भी एक स्कीम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रॉम 1% to 8% आपके इनवॉइस वैल्यू पे वो आपको एज अ स्कीम वापस कर देगी। उसके अलावा आपका जो भी जीएसटी लगा है वो जीएसटी आपका वापस होगा। तो ये 3 बेनिफिट्स गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को देती है। उसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ईसीजीसी का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज। इससे क्या होता है, आपकी पेमेंट की गारंटी हो जाती है कि कल को कोई इशू आता है तो आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट खड़ी है आपके साथ में कि यस वी आर हियर टू हेल्प यू। और वो गवर्नमेंट क्या करती है, ईसीजीसी में 95% तक आपको आपका सम इंश्योर्ड करती है, आपके रिस्क को कवर करती है। तो ये ईसीजीसी हो गया। उसके अलावा फिर आप एग्जीबिशन की बात आती है, तो मैंने बताया दिया आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं एग्जिबिट करते हो जाके ओवरसीज मार्केट में, तो उसका अप टू 1.5 लाख का फेयर वो गवर्नमेंट आपको वापस करती है। सैम्पलिंग चार्ज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कोई सैंपल्स बाहर भेजता हूँ तो आप 50,000 रुपए तक की गवर्नमेंट उसको वापस करती है, अप टू 50,000, जो भी विच एवर इज लोअर। एक्चुअल अगर मान लो आपका 35,000 रुपए आया, एक्चुअल फॉर एग्जांपल इफ द टोटल बिलिंग कॉस्ट इज 35,000 रुपीज, गवर्नमेंट लिमिट इज 50,000, सो यू विल गेट 35,000। Right. सेम इज विद एयर फेयर आल्सो। तो एयर फेयर गवर्नमेंट देती है, प्लस स्टॉल चार्जेस भी गवर्नमेंट देती है, मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट बियर करती है। अब तो ये गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट टू एक्सपोर्टर्स। तो बहुत अच्छा मौका है एक्सपोर्टर्स के लिए, आप इंटरनेशनल बिजनेस में आओ। ऑल द वर्ल्ड वांट्स टू बाय फ्रॉम इंडिया। लाइक रिसेंटली आई टोल्ड यू दैट आई मेट विद वेरी वेरी प्रोमिनेंट बायर्स इन ओवरसीज। तो हम लोग बात करते हैं तो दे वांट टू बाय फ्रॉम इंडिया, दे लव्स इंडिया, दे वांट टू सी इंडिया ग्रोइंग फास्टर देन अदर कंट्रीज। क्योंकि एक बात आती है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करने वाले देश हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू सी a successful Bharat, a successful India. So in that growth story, they want to also add and contribute something. तो अभी बहुत अच्छा मौका है आफ्टर कोविड। हम लोगों ने देखा है कि सेंटिमेंट्स इतना पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद मतलब ये अपने आप में एक ब्रांड इंडिया, नाउ इंडिया इज अ ब्रांड इंडिया, पहले भी था अब, लेकिन बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के पास में कि हम एक्सपोर्ट में एंटर करें। Rightly said, and you have shared so many information in very brief note, which is really important and wonderful also, because it will help many exporters, aspiring exporters to understand things in a very nutshell. There are so many things, if somebody wants to explore, probably they would take long time, but in a nutshell it is the crux of the everything which is there in paper. Right, exactly. Now coming back to you again, if I ask you, like, what is your take on success? What do you feel about it? Like I told you that business is a journey, so I feel that success is also a journey. Personally, I feel that I cannot say for myself I am a successful entrepreneur till my last breath, because कभी होता है कि हम लगता है कि हाँ हम सक्सेसफुल हो गए, फिर मुझे लगता नहीं अभी मुझे और कुछ करना है। तो सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी विच हैव नो एंडिंग। लाइक अगर आप ये सोच लोगे कि हाँ मैं अब सक्सेस हो गया हूँ, तो आप शायद आगे आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा काम करने का। इसीलिए सक्सेस इज ऑल्सो अ प्रोसेस कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरे लिए एक सक्सेस इस जर्नी है, एक प्रोसेस है जो आप कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। एंड दिस to become successful, this journey gives me a positive motivation to do something. So success for me is a journey, और सक्सेस छोटी छोटी खुशियां को हम सक्सेस समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी कंडक्टेड अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट ऑफ लाइक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट ऑर्गेनाइज्ड एट बनारस लास्ट मंथ। तो उसमें 12 कंट्रीज से लोग आए, दे शेयर्ड देयर व्यूज, दे शेयर्ड देयर चैलेंजेस इन डूइंग बिजनेस विद इंडिया।
Plus, they have also shared what are the opportunities their market is giving for Indian exporters. So for me, that was very successful because एक stage पे आकर के जहाँ हमारे manufacturers भी बैठे हैं, our weavers also there, our buyers also there. So we came together and to give hand holding to each other कि आप buyers हो तो we will support you with our products. आप अगर producers हो तो buyer said that we will give you orders but we want this and this. तो ये एक successful event हुआ. फिर we visited that high point market from government of India. हम लोग को government of India ने भेजा कि आप Indian pavilion वहाँ पे लगाओ. And आप मानोगे नहीं कि in that 100 years plus older market event, which is one of the biggest event in home furnishing industry, our Indian pavilion, this is first time we have participated as an Indian pavilion in that overseas event. तो ये अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट हम लोगों के लिए है कि पहली बार इंडिया वहाँ गया. We have showcases our products. वहाँ पे क्या हुआ कि people wants to buy from India, they loves India, but ये कि अब ये हम लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि we were able to represent our story कि what India is, how our Indian products are different to that of other products, why buyer should buy from India. Good. So this is also another successful event for us. So these are small successes which give us happiness. Amazing. So now if I ask you for any message or advice you would like to share with our viewers and listeners. पहली बात तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इट इज नॉट इजी थिंग कि आप एज अ बैंकर ये काम कर रहे हैं और ये जो टॉपिक आपने आज एक्सपोर्ट कर लिया है, दिस इज वेरी वेरी गुड टॉपिक. अभी आप देखो कि our Indian export in comparison to China is still we are 10 times less than China. So elephant, this is the cake of very very big cake. Now buyers are moving from China to other countries. It is up to our entrepreneurs, our young entrepreneurs. तो वो उस केक को कैसे ग्रैब करते हैं. हम इंडिया एज अ कंट्री कितना हम उस केक को ग्रैब कर पाते हैं, क्योंकि अगर हमने देरी की तो दैट केक इज already being distributed to Vietnam and Bangladesh and other countries. So we have to be very fast, we have to be very presentable. तो ये young entrepreneurs के लिए मेरे लिए बस यही एक मैसेज है 2 लाइन का कि आप आगे आओ. ठीक है, आप जॉब के लिए सोच रहे हो, बट you international business is full of opportunities. Challenges are there, but for example if I talk about small thing like Russia war, तो अभी क्या हुआ कि यूरोप के सारे लोग वहां से चले गए, यूएस के सारे लोग चले गए. नाउ they want our Indian goods. इंडियन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स इन देयर मार्केट. दे आर विलिंग टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फूड टू टेक्सटाइल टू ऑटोमोबाइल. सो देयर आर many opportunities nowadays in overseas market for Indian goods. So we have to come in this international business. Government is giving support. If any challenge comes, if any issue comes, you contact HEWA directly. You contact us, phone us directly. You can post any comment, any question in your YouTube interview thing section. We will immediately revert you because we will love to, and it is I will personally love to handle all the queries किसी के अगर मन में आती हैं. But I want just to let's start exporting from India. We need to create an environment, international business environment. हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अपना इंडिया नंबर 1 हो पूरे एक्सपोर्टिंग सेक्टर में पूरे दुनिया में. वर्ल्ड ट्रेड 2% से बढ़ के ग्लोबल ट्रेड में हमारा पोर्शन 2% से बढ़े, 2% पे लिमिटेड ना रहे. थैंक यू. What an amazing insights you have shared about export-import business and what all opportunities are available and how we can grab as an like emerging developing economy. And most important thing is like we have very big SME segment as compared to anywhere in the world. And there are immense opportunity among these small manufacturers, traders, suppliers in the overseas market, and market is expanding very fast. So we need to be even more faster as compared to what market is moving at this point in time. And it's really an challenge for our like manufacturers how they can grab these opportunities. So there is immense support available from the government, from the banks, from the trade associations. So we just need to go and explore what is there. So that is really amazing, and you have shared so many wonderful things, and I am really thankful to you, Vikas. I really enjoyed the conversation and looking forward to hear more from you again soon. Thank you so very much. Thank you. Probably we will talk about this thing in further more detail. Thank you once more.
अगर अगर फीडबैक अच्छा रहता है इसका, और अगर लोग क्वेरी क्रिएट करते हैं या लोगों के मन में कोई डाउट आता है, तो फॉर श्योर एंड ये ऐसा कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए. एंड आई पर्सनली लव द कन्वर्सेशन विद यू बिकॉज यू आर आल्सो अ बैंकर, यू हैव वेरी गुड नॉलेज, यू हैव वेरी डेप्थ नॉलेज. सो हम लोग एक मिलके एक बोलते हैं ना, एक टीम की तरह से एक बना सकते हैं कि हाँ ये कैसे इंडिया की जर्नी को आगे ले जाना है. Correct. A story of India, we need to share it on global stage. So what you are doing, you are just read my story, let's inspire the world. So this is a perfect example of what you are doing. Right. And now I am also on this side of table, from banking to the entrepreneur side, and I am also working on cross border payments. So again, very good. At a later stage, probably I would also be able to help exporters in terms of for payments. sure. So that is also thing which we are also looking forward to, and let's see how it goes. And also I will share your social media link along with the interview so that people can be in touch with you, take your help and guidance also. Guys, don't forget to check this out too. And thank you so very much everyone for watching. Thank you. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you and have a good time.